Hello friends, welcome to all of you in this video. Now today we are going to start the problem on pressure exerted by liquid column. ये प्रॉब्लम आपको 12th क्लास के न्यू सिलेबस का जो टेक्स्ट बुक है उसमें ऑलरेडी सॉल्व करके दिया हुआ है। फिर भी हम एक बार देखेंगे कि ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व किया जाता है। मैं आपको ये प्रॉब्लम पढ़कर दिखाता हूँ। टू डिफरेंट लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो 1 एंड रो 2 exert the same pressure at a point. What will be the ratio of the height of respective liquid column? We have given the density of both liquids rho 1 and rho 2. This is the density of both liquids, and we have to calculate the ratio of these both liquid column. Then let h1 be the height ऑफ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो 1। हमने h1 हाइट कंसिडर की है कि जिस लिक्विड की डेंसिटी रो 1 है। सिमिलरली h2 बी द हाइट ऑफ लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो 2। हमने सेकंड लिक्विड की जो हाइट है वो h2 कंसिडर की है कि जिसकी डेंसिटी रो 2 है। लेट p1 बी द प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो 1। p1 ए प्रेशर है जो एक्सर्ट किया है लिक्विड ने कि जिसकी डेंसिटी रो 1 है। देयरफॉर P1 इज इक्वल टू H1 रो 1 G। दिस इज इक्वेशंस नंबर 1। Similarly, P2 be the pressure exerted by liquid of density rho 2। A pressure exerted by liquid of density rho 2, जिस लिक्विड की डेंसिटी रो 2 है उसने एक्सर्ट किया हुआ प्रेशर है P2। देयरफॉर P2 इज इक्वल टू H2 rho 2 G। This is equations number 2. We have given the pressure exerted by both liquid column is the same. Therefore, P1 is equal to P2। हम लिख सकते हैं P1 is equal to P2। Therefore, the value of P1 and P2 put from equations 1 and 2. The value of P1 is H1 rho 1 G from equations 1 is equal to the value of P2 from equation 2 H2 rho 2 G. The G on both sides is same. Therefore, G get cancel here. H1 upon H2 is equal to rho 2 upon rho 1. This is the required ratio of heights of liquid column. The second problem, a swimmer is swimming in a swimming pool at 6 meters below the surface of waters. Calculate the pressure on the swimmer due to water above. We have given the depth of swimming pool and we have to calculate the pressure exerted by water on the swimmer. We have given rho is equal to density of water is 1000 kilogram per meter cube and acceleration due to gravity is 9.8 meter per second square. Let depth, that is height, h is equal to 6 meter, density is equal to 1000 kilogram per meter cube and G is equal to 9.8 meter per second square. Formula, हम प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम इस टॉपिक का जो स्टडी किया था उस टॉपिक पर ये प्रॉब्लम है। हम उस प्रेशर के फार्मूले से भी ये प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम, that is P is equal to H rho G.
the liquid or water on swimming pool is at rest. Therefore, the pressure exerted by liquid column, that is pressure P is equal to H rho G. Put the value of H rho and G from given data. The value of H is 6 meter into value of rho is 1000 kilogram per meter cube and value of G is 9.8 meter per second square. Solve this. 6 into 1000, that is 6000 into 9.8. Then solve by using log table. आपके पास log table होगा तो by using log table you can calculate or you can solve this value. आप इसे सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 58800. यहाँ पे डेसिमल पॉइंट है. when we shift the decimal points towards the left hand side, it means that आप जब डेसिमल पॉइंट 1 2 3 4 डिजिट्स पीछे लेकर जाएंगे तो 10⁻+4 इसकी वैल्यू आएगी 5.88 into 10⁻+4 Pascal. This is the value of pressure, or you can write here 5.88 into 10⁻4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. आपके पास टेक्स्ट बुक हो, आपने देख लिया होगा तो इसकी वैल्यू जो है ये बुक्स में 5.88 इंटू 10⁻5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर दिए हुए, लेकिन आप इसे सॉल्व कर देखेंगे तो इसकी वैल्यू 5.88 इंटू 10⁻4 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर आती है. देन थर्ड प्रॉब्लम्स. अ रेक्टेंगुलर टैंक इज 10 meter long, 5 meter broad and 3 meter high. It is filled to brim with water of density 10⁻3 kilogram per meter cube. Calculate thrust at the bottom. We have to calculate thrust or at the bottom of rectangular tank. We have to calculate thrust at the bottom. Let L is equal to 10 meter, B is equal to 5 meter and S is equal to 3 meter. L is equal to 10 meter, B is equal to 5 meter, H is equal to 3 meter, rho is equal to 10⁻3 kilogram per meter cube. You know very well that value of G is equal to 9.8 meter per second square. We have to calculate thrust at the bottom. It means that we have to calculate force. Let formula the pressure exerted by liquid column, that is P is equal to H rho G. हमें फोर्स फाइंड आउट करने के लिए, थ्रस्ट फाइंड आउट करने के लिए पहले प्रेशर निकालना पड़ेगा. तो चलिए हम प्रेशर निकालते. You know that very well that pressure is equal to H rho G, that is pressure exerted by a liquid column. ये जो लिक्विड है ये टैंक में है, ये भी एट रेस्ट लिक्विड है. देयरफॉर प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड कॉलम, दैट इज प्रेशर इज इक्वल टू H rho G. पुट द वैल्यू ऑफ H 3 into 10⁻3 into 9.8. Therefore pressure is equal to 29.4
इंटू 10⁻³ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आपके पास लॉग टेबल होगा तो आप इसे लॉग टेबल के सहायता से भी सॉल्व कर सकते हैं, कैलसी के सहायता से भी आप सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज द प्रेशर्स, that is P is equal to 29.4 into 10⁻³ Newton per meter square. You know very well that we know pressure is equal to normal force per unit area, that is thrust per unit area. Therefore F is equal to pressure into area. First we have to find out the area of bottom. Area of bottom A is equal to length into breadth. Therefore area is equal to length is 10 meter into breadth is 5 meter. Therefore area of bottom is equal to 50 meter square. Area of bottom is 50 meter square. Then thrust on bottom F is equal to pressure is 29.4 into 10⁻³ into 50. Solve this by using log table. We get, इसकी वैल्यू आपके पास आएगी 1.47 into 10⁻6 Newton. This is the thrust on the bottom.